Welcome back students. Today we will learn some points about the reproductive health chapter from class 12th. In this video we will learn about the infertility term, that what is infertility. As we know that the condition refers to failure to conceive after 2 years of unprotected sexual cohabitation. Means without use of contraceptives, if the pairs or the couples are failure to conceive up to 2 years also, then they are called as infertile. Okay, so there are different reasons for the infertility. In case of some cases that the female is infertile, or in some cases the male is infertile. Okay, in previous video we have learned about the reasons in which the male is infertile, like oligospermia or azoospermia, in which the low sperm count is there, or absence of sperms are there, or these sperms are unmotile. Like these are reasons for the male also. In this video we will learn about the reasons in which the female is infertile. First thing is that anovulatory cycle. Due to the anovulatory cycle means there is no ovulation. If ovulation is not there, then there is no chance of fertilization. Okay, अगर ओवम ही नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, fertilization ही नहीं हो सकता. So there is the one reason. Another reason is that if oligo-ovulatory cycle means irregular ovulation, if proper regular means monthly अगर menstrual cycle नहीं हो रही, means irregular ovulation नहीं हो रहा है वहाँ पे, so what will happen, there is chances of that infertility. Okay, that is another reason that why it is happening, or there is many infections or any internal problems are there. These are included reasons. Okay, another reasons for that, for the both male and females also, that the congenital diseases is also one of the reason that the couple may become infertile. Some drugs are there, by using of that drugs the ability for fertility is also may decreases. Then immunological factors are also affecting for the infertility reasons, and last is important, that is psychological factors. There are so many cases in India also, or everywhere worldwide also, that so many people are thinking that they are not capable for fertility. Okay, so psychological problems are much more in that. So it is necessary that they have to go towards the psychologist or towards the doctors and take treatments about that, and they have to lead the normal life. So psychological factor is curable. Okay, we have learned about different techniques also, that is assisted reproductive techniques also. In that we have learned about the ZIFT or artificial insemination. In this we will learn about the diagrammatically that how it is actually happens. Suppose for example we have learned about the ZIFT, that what is ZIFT, that is the zygote. Okay, intrafallopian transfer. So suppose this is the ovum, okay, from a female, and these are the sperms from a male. So in laboratory conditions, in proper laboratory conditions, these both are given and into the petri plates, and they have given all the temperatures, pH, or all the necessity environment which is available into the fallopian tube. Okay, so same environment, same all material is provided in this in vitro conditions, in laboratory conditions. Okay, and then these ovum and sperms are artificially fertilized. When this fertilization is taken place, then that embryo or that zygote was multiplied into 8 cell stage. Okay, then at 8 cell का जब हो जाएगा वो zygote, then it was transferred into fallopian tube. So यहाँ पर एक fallopian tube है. Some cases what happened that the fallopian tube is proper in this case. Okay, but some case what happened that कि ये बहुत ही छोटी होती है कि sperms may not come to up to this fallopian tube, और sometimes यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लोज होगा या फिर पैक होगा या फिर कम होगा, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके अंदर. सो व्हाट हैपन दैट, और या फिर ये जो इनसाइड का पार्ट है यूटेरस का, वो अगर प्रॉपरली नहीं होगा कि इम्प्लांटेशन होने के लिए, तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. तो ये जो केस है वहाँ पर, सो
जब 8 सेल का जब हो जाएगा एम्ब्रियो, देन इट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू दिस फेलोपियन ट्यूब, देन इट इज कॉल्ड एज जिफ्ट. Okay, ZIFT. In case we will see that same thing is given, that sperm or donor or male, he is donor means he is donating the sperms, and here also donor, that is female, that is she is also donating the ova, and then both are donated, they are taken into the laboratory, so zygote was formed. Okay, some cases what happened that the zygote was not transferred into the फेलोपियन ट्यूब, मीन्स यहाँ पर अगर नहीं है, डायरेक्ट हमने उसको यूटेरस में इम्प्लांट किया है. सो व्हाट हैपन दैट बाय द यूजिंग सम स्पेसिफिक टेक्निक्स, ये बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सन्स के थ्रू ही किया जाता है. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है दैट ब्लास्टोमर, ये 8 सेल का होने के बाद अगर उससे ज़्यादा, अगर मीन्स उसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, ओके, मल्टीप्लिकेशन, then it was transferred directly into, other than fallopian tube, into the uterus. So that technique is intrauterine transfer, IUT. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर बोलेंगे. ओके, सो दिस डन बाय द डायरेक्टली इंसेमिनेशन, इंजेक्शंस के थ्रू या फिर अलग अलग मेथड्स यूज करके भी इस टेक्निक से काम किया जा सकता है. ओके, अनदर स्मॉल टेक्निक इज दैट ICSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. यहाँ पर क्या होता है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सम स्पर्म्स आर देयर विच आर नॉट हैविंग एबिलिटी फॉर मोटिलिटी, मीन्स बहुत सारे ऐसे स्पर्म्स होते हैं कि वो मोटाइल नहीं होते हैं. ओके, सो ओवम प्रॉपर है, मीन्स फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते, मीन्स उनकी जो मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही लो होती है. In that case, by using the injectable pipettes, okay, what is done by the specialized persons or doctors, that the sperms was taken and then they are injected inside the ovum, directly inside ovum के insert किए जाते हैं inside the ovum. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर उसकी मोबिलिटी नहीं हो रही है तो हम आर्टिफिशियली जानबूझ के उसको इंसर्ट कर रहे हैं ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के लिए, and then the fertilization will takes place. So यहाँ पर क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मीन्स स्पर्म को हम इंजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ओवम, जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर हम डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज वन अनदर टेक्निक आल्सो यूज्ड इन दिस आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. ओके, सो ये जो सभी टेक्निक्स है बहुत ही प्रॉपरली मैनेज किया जाता है इनको, और इससे क्या होगा कि those couples who are having infertility problems in India, they are treated with properly care. okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इमोशनल वैल्यूज़ है या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको भी बहुत ही कम किया जाता है. बहुत जगह पर क्या होता है कि जो चाइल्डलेस मदर और फादर रहते हैं उनको भी जो सोशल लोग रहते वो ताने देना वो शुरू होते हैं काम, तो ये प्रॉपर नहीं होता है. उसके अंदर कुछ ना कुछ इस रीज़न से हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं. Okay, so these are all about the infertility and the reasons how we can overcome these problems. These all are included into the reproductive health. Thank you.